ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासदेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कुपे कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यः सच्चा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। The Krishna conscious movement is the genuine Vedic way. After reading an article on the Krishna conscious movement in the Los Angeles Times, January 11, 1970, Srila Prabhupada begins an unusual correspondence with Dr. J.F. Stahl, Professor of Philosophy and of South Asian Languages at the University of California, Berkeley. Excerpt from the Los Angeles Times article. अच्छा मतलब लॉस एंजलिस टाइम्स में ये छपा। Dr. J.F. Stahl, Professor of Philosophy and Near Eastern Languages at UC Berkeley and an instructor in Indian philosophy, believes that Krishna sect is an authentic Indian religion and that its adherents are sincere. He attributes the society's rapid increase in members to the tendency of today's younger generation to reject organized church going while at the same time searching for fulfillment of a belief in mysticism. ये थोड़ा जादू टोने वाली बात लग रही है। तो जी कंप्लीट कर दीजिए पूरा ही। ओके ठीक है। He points out, however, that persons who turn away from Christianity, Mohammedanism, and Judaism have usually lost faith with the personal God of those religions and are looking for a mystical religion without absolutes. ये जुडाइज्म क्या है? जुडाइज्म नवीन प्रो आपको पता है क्या? मेरे ख्याल से जो ईसाई थे वो जो इजराइल में जो करते हैं वो जुरासुरा ऐसे कुछ सुना मेरे को एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रही बट दे आर क्रिश्चियनिटी के फादर बोल सकते हैं। ओके हाँ मतलब दिस इज वन ऑफ द रिलीजन उदित प्रो जूइश पीपल का है। हाँ पीपल का जूइश राइट ठीक है। तो उनके टाइम पे ये ज्यादा एक्टिव रहा होगा इसलिए वो उन तीनों के बारे में बोल रहा है कि ये सब जो लोग फॉलो करने वाले थे ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट की तरफ चले गए हैं बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर मिस्टिकल रिलीजन विदाउट एब्सोल्यूट्स। उसको मिस्टिकल लग रहा है मतलब वो जादू टोने की चीज लग रही है। तो अभी मतलब वो तो थोड़ा सार्कास्टिक सा भी चल रहा है वो फेवरेबल भी लग रहा है। These people in the Krishna movement have turned to Hinduism, but curiously, it is a cult that is highly personalistic. ठीक है? Stahl said they accept a personal God Krishna and Christianity has that. I feel that they have transferred some of their Christian background to a Hindu sect. He also feels that they spend too much time chanting to develop a philosophy. Achha. On these grounds, he and others on the faculty turned down the request to grant credit for an experimental course in Krishna consciousness, which will be taught during the winter quarter by Hans Carey, president of SAIT's Berkeley Temple.
मतलब वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे उसको हम क्रेडिट नहीं देंगे पर ये कोर्स जो भी उनके यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है। Okay. Yes. Naveen Prabhu. Srila Prabhupada letter to the Los Angeles Times, January 14, 1970, editor Los मतलब Angeles. लॉस एंजलिस टाइम्स का वो एक्सट्रैक्ट था जो छपा, फिर प्रभुपाद ने उसका रिप्लाई किया है लॉस एंजलिस टाइम्स को। Okay. Dear sir, with reference to your article in the Los Angeles Times dated Sunday, January 11th, 1970, under the heading Krishna Chant, I beg to point out that the Hindu religion is perfectly based on the personal conception of God or Vishnu. The impersonal conception of God is a side issue or one of the three features of God. The absolute truth is ultimately the supreme personality of Godhead. The Paramatma conception is the localized aspect of his omnipresence, and the impersonal conception is the aspect of his greatness and eternity. But all these combined together make the complete whole. ओके, तो जी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके, कनक। Krishna. Dr. J.F. Stoll's statement that the Krishna cult is a combination of Christian and Hindu religion, as if something manufactured by concoction, is not correct. If Christian, Mohammed, or Buddhist religions are personal, that is quite welcome. But the Krishna religion has been personal from a time long ago, when Christian, Mohammedan, and Buddhist religions had not yet come into existence. According to the Vedic conception, religion is basically made by the personal God as his laws. Religion cannot be manufactured by man or anyone except God, superior to men. Religion is the law of God only. Hare Krishna. Unfortunately, all the Swamis who came before me in this country stressed the impersonal aspect of God without sufficient knowledge of God's personal aspect. In the Bhagavad Gita, therefore, it is said that only less intelligent person considered that God is originally impersonal but assumes a form when he incarnates. The Krishna philosophy, however, based on the authority of the Vedas, is that originally the absolute truth is the supreme personality of Godhead. His plenary expansion is present in everyone's heart in his localized aspect. And the ये किसकी बात impression, कर रहे हैं? ये समझ गया, plenary expansion is present in everyone's heart in its localized aspect. कृष्णा के लिए बोल रहे हैं नहीं कृष्णा के लिए बोल रहे हैं, बट जब वो क्षीरोदक्षाय विष्णु नहीं परमात्मा के रूप में आ जाते हैं ना, भगवान सबके हृदय में जो बैठ जाते हैं, तो ये उस फीचर की बात कर रहे हैं भगवान के, है ना? मतलब जो तीन फीचर की प्रभात बात किए हैं कि वैसे तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बट वो फिर तीन फीचर में आ जाते हैं, परमात्मा के रूप में, इम्पर्सनल ब्रह्मन के रूप में, और फिर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, तो वो है ऐसे कर। यस यस आपका ये भी रह गया ना, आगे पढ़िए। एंड द इम्पर्सनल ब्राह्मण, फिर लास्ट एंड द इम्पर्सनल ब्राह्मण effulgence is the transcendental light and heat distributed everywhere. Yeah. In the Bhagavad Gita, it is clearly said that the aim of the Vedic way of searching out the spiritual absolute truth is to find the personal God, one who is satisfied only with the other aspects of absolute truth, namely the Paramatma feature or the Brahman feature, is to be considered possessed of a poor fund of knowledge. Recently, we have published our Shri Isha Upanishad, a Vedic literature. In this small booklet, we have thoroughly discussed this point. Yes. As far as Hindu is concerned, there are millions of Krishna temples in India, and there is not a single Hindu who does not worship Krishna. Therefore, this Krishna consciousness movement is not a concocted idea. We invite all scholars, philosophers, religionists, and members of the general public to understand this movement
by critical study, and if one does so seriously, one will understand the sublime position of this great movement. एक्चुअली उसने ये बोल दिया ना कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को कि कॉन्कॉक्टेड आइडिया है, तो प्रभात बोल रहे हैं कि मतलब हमारा कुछ नया नहीं है, ये पहले पुराने टाइम से हिंदू टेम्पल्स में हिंदू लोग सब पूजते आ रहे हैं, और हिंदू तो सभी कृष्णा को भगवान मानते ही हैं, तो हमारा ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्कॉक्टेड आइडिया वगैरह करके कुछ। ओके गुरुजी। नेक्स्ट। The chanting process is also authorized. Professor Stoll's feeling of disgust in the matter of constant chanting of the holy name of Krishna is a definite proof of his lack of knowledge in this authorized movement of Krishna consciousness. Instead of turning down the request to give Carey's course credit, he and all other learned professors of the University of California at Berkeley should patiently hear about the truth of this authorized movement, so much needed at present in godless society. Credit for the course was later established. मतलब ये कह रहे हैं कि क्रेडिट तब तो दिया नहीं था, प्रभात भी उस बात को बोले हैं कि instead of turning down request to give course credit, है ना, पर ये बता रहे हैं कि बाद में जब ये सब कम्युनिकेशन हुआ होगा तो कोर्स क्रेडिट दे दिया गया था, was later published, established, है ना। Yes, बताइए। This is the only movement which can save the confused younger generation. I shall invite all responsible guardians of this country to understand this transcendental movement and then give us all honest facilities to spread it for everyone's benefit. A.C. Bhaktivedanta Swami, spiritual master of the Hare Krishna movement. The exchange between Srila Prabhupada and Dr. Stahl. January 23, 1970. Swami A.C. Bhaktivedanta. ये मतलब स्टॉल ने रिप्लाई किया स्वामी जी को, करेक्ट ना? ये स्टॉल कौन है जी? ऊपर का टाइम्स मिस कर दिए। मतलब पहले तो इसमें बताया कि लॉस एंजलिस में वो दिखाई कि क्या छपा, ठीक है, फिर उसके रेस्पॉन्स तो उसमें बताया कि डॉक्टर स्टॉल ऐसा ऐसा सोचते हैं, तो प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस टाइम को एक लेटर लिखा जो अभी हमने पढ़ा है ना, फिर उसको पढ़ने के बाद अभी स्टॉल ने प्रभुपाद को लिखा है ना। यस, जब नीचे तो उसमें आप अभी जो पढ़ने आ रहे हैं ये स्टॉल कोर्स के बीच अब प्रभुपाद के बीच का कन्वर्सेशन शुरू हुआ है, तो स्टॉल ने प्रभुपाद को लिखा होगा, उसने वो एलए टाइम्स को जो लेटर भेजा है वो पढ़ लिया होगा उसने। January 23, 1970. Swami A.C. Bhaktivedanta. Dear Swami ji, thank you very much for sending me a copy of your letter to the Los Angeles Times. अच्छा, प्रभुपाद ने एलए टाइम्स को लिखा। आप एलए टाइम्स समझ गए वैसे क्या है? हाँ, ये लोकल न्यूज़पेपर होगा कोई। हाँ, तो प्रभुपाद ने क्या ना, एक कॉपी डॉक्टर स्टॉल को भी भेज दी उसकी, तो उसका रेस्पॉन्ड फिर डॉक्टर स्टॉल ने किया है यहाँ पे, है ना, जिससे मतलब ऐसे ही लग रहा है। Thank you, dear Swami ji, thank you very much for sending me a copy of your letter to the Los Angeles Times, now also published in the Daily Californian. I think you will agree with me that apart from publicity, little is gained by discussing religious or philosophic issues through interviews and letters in the press. But allow me to make two brief observations. Yes, Prabhuji. First, I know that devotion to Krishna is old. मतलब उसे भी पता था, though definitely not as old as the Vedas. अब उसको इतना नहीं पता है कि वेदास कृष्ण से ही आए हैं, तो एक्चुअली कृष्ण इज ओल्डर देन वेदास, है ना, करेक्ट ना? Yes. And has never been influenced by Christianity, Islam or Judaism. I never refer to Buddhism in this connection. The differences between the personal and impersonal are relatively vague. But adopting this distinction for simplicity, I expressed surprise at seeing people who have grown up in a Western culture which stresses the personal take to an Indian cult which does the same. I am less surprised when people who are dissatisfied with Western monotheism take to an Indian philosophy which stresses an impersonal absolute. तो ये क्या बात कर रहा है, मतलब समझ impersonal absolute की क्यों बात कर रहा है वो? ये समझ नहीं आया मुझे इतना, क्योंकि प्रभुपाद तो पर्सनल की बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि
इंडियन फिलोसफी में जा रहे हैं वेस्टर्न मोनोथिज्म वाले, तो मैं तो कुछ इसमें सरप्राइज नहीं है, वो तो ठीक है, बट इंडियन फिलोसफी which stresses an impersonal absolute. I express surprise at seeing people who have grown up in a Western culture which stresses the personal take to an Indian cult which does the same. Oh, वो कह रहा है कि मतलब वो सरप्राइज हो गया था जब उसने देखा कि वेस्टर्न कल्चर जिसमें कि वो पर्सनल फीचर को मानते हैं, जैसे जीसस वगैरह को मानते हैं, वो उसको भी छोड़ के दूसरे पर्सनल फीचर इंडियन कल्ट में चले गए जो विच डज द सेम, मतलब वो भी पर्सनल फीचर को मानते हैं। बट वो कह रहा है कि जब भी पहले उससे पहले लोग प्रभुपाद लिखे थे ना लेटर में कि मेरे से पहले जो भी लोग आए वो इम्पर्सनल एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस किए, तो कह रहा है कि मैं उससे ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ जो कि वेस्टर्न मोनोथिज्म से डिससेटिस्फाई हो गए और इम्पर्सनल एब्सोल्यूट को पकड़ लिए थे, क्योंकि वहां पे चेंज आ रहा है ना पर्सनल से इम्पर्सनल। तो कह रहा है मैं उससे ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, बट हाँ उससे मैं सरप्राइज हूँ कि पर्सनल से पर्सनल पे चले गए, वेस्टर्न कल्चर से इंडियन कल्चर में। करेक्ट ना? ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट। moving to this. Second, I never expressed nor felt disgust at the chanting of the name of Krishna. I'm not only not, and I am तो not only not typo है। irritated like some people, but I rather like it. But it is an indisputable fact that the Bhagavad Gita, not to mention the Vedas, does not require such constant chanting. Gita deals with quite different subjects, which I treat at some length in my courses on the philosophies of India. मतलब ये टाइपो नहीं है, अगर इसे पढ़ेंगे तो वो ये बोल रहा है कि आई एम नॉट ओनली इरिटेटेड रादर आई लाइक इट, है ना? तो वैसा है, बट इट इज एन इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि चैंटिंग वेंटिंग की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पसंद है चैंटिंग। तो नहीं, वो उसका पॉइंट है कि चैंटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू द वेदास और कांस्टेंट चैंटिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, वो ये कह रहा है ना, डज नॉट रिक्वायर सच कांस्टेंट चैंटिंग। यस, ओके, मतलब वो उसको टॉप नहीं मान रहा, वो कह रहा है कि हाँ है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो पसंद है, कीर्तन वगैरह करते हैं, बट इतना कांस्टेंट चैंटिंग पे जो आपका फोकस है उसकी जरूरत नहीं है। वो भगवत गीता के हिसाब से, यस, उसके अकॉर्डिंग गीता डज नॉट टेल्स और वेदा टेल्स, उसके अकॉर्डिंग गीता कवर्स अदर डिफरेंट सब्जेक्ट। या यस, ओके, ठीक है। ये क्या स्टॉल वो का इशू रिप्लाई रीड है। कर रहा है? हाँ बोलिए। मैंने कहा इशू रीड नहीं कर रहा। वो लिसनिंग मोड में ईशु प्रभु स्वाति होते जी। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं कॉन्फ्रेंस चल रही है अभी कॉलेज में, उसी में बिजी था मैं जी। मेरा टर्न कभी भी आ सकता है, एक्चुअली प्रेजेंट करना है मुझे, इसलिए मैं वेटिंग। ठीक, यस कनक माता जी। ये तो हो गया खत्म। अब प्रभात रिप्लाई किए होंगे शायद इसको, है ना? हाँ, प्रभात का रिप्लाई इसके बाद, ठीक है। यस माता जी। January 30, 1970, J.F. Stoll, Professor of Philosophy and of South Asian Languages, University of California, Berkeley, California. My dear Professor Stoll, I thank you very much for your kind letter dated January 23, 1970. In the last paragraph of your letter, you have mentioned that you are not irritated at the chanting of the Hare Krishna mantra, like some people, but rather like it. This has given me much satisfaction, and I am sending here with a copy of our magazine, Back to Godhead, issue number 28, in which you will find how the students at a program at Ohio State University like this chanting of the Hare Krishna mantra, although all of them were neophytes to this cult of chanting. नियोफाइट मतलब समझ गए ना माता जी आप? न्यू है ना प्रभु जी, और जिन्हें हाँ। नॉलेज नहीं थी। हाँ बिल्कुल, न्यू कमर हो गए जो, है ना? हाँ, यस माता जी। actually this chanting is very pleasing to the heart and is the best means of infusing spiritual consciousness or Krishna consciousness into the hearts of the people in general. This is the easiest process of spiritual realization and is recommended in the Vedas. In the Brahmaradya Puran, it is clearly stated that it is only chanting of the holy name of Hari, Krishna, that can save people from the problems of materialistic existence, and there is no other alternative, no other alternative, no other alternative in this age of Kali. Hare Krishna.
Yeah. Western culture is monotheistic, but Westerners are being misled by impersonal Indian speculation. The young people of the West are frustrated because they are not diligently taught about monotheism. They are not satisfied with this process of teaching and understanding. The Krishna conscious movement is a boon to them because they are being really trained to understand Western monotheism under the authoritative Vedic system. We do not simply theoretically discuss, rather, we learn by the prescribed method of Vedic regulations. But I'm surprised to see that in the last paragraph of your letter, you say it is an indisputable fact that the Bhagavad Gita, not to mention the Vedas, does not require such constant chanting. जो भी हम पढ़े थे ना, उसने स्टॉल ने बोला था कि भगवद गीता के हिसाब से तो constant chanting की जरूरत नहीं है. I think that you have missed the following verse in the Bhagavad Gita, apart from many other similar verses. Satatam kirtayanto mam yatantas cha dranvata vartaha namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. The engagement of the great souls freed from delusion and perfect in their realization of God is described here. Satatam kirtayanto mam. They are always chanting my glories, and nitya yukta upasate, always worshipping me. Krishna. Yes. No inclusion. So I do not know how can you say indisputable, and if you want references from the Vedas, I can give you many. In the Vedas, the chief transcendental vibration Omkar is also Krishna. ये तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ना syllables में Pranava Omkara is the substance of the Vedas. Following the Vedas means chanting the Vedic mantras, and no Vedic mantra is complete without Omkar. In the Mandukya Upanishad, Omkar is stated to be the most auspicious sound representation of the Supreme Lord. This is also confirmed again in the Atharva Veda. Omkara is the representation of the Supreme Lord and is therefore the principal word in the Vedas. In the connection, the Supreme Lord Krishna says, Pranava Tarva Vedeshu, I am the syllable Om in all the Vedic mantras. Bhagavad Gita 7.8. Furthermore, in Bhagavad Gita, chapter 15, verse 15, Krishna says, I am seated in everyone's heart. By all the Vedas, I am to be known. I am the compiler of the Vedanta, and I know Veda as it is. Scroll down. The Supreme Lord, seated in everyone's heart, is described in both the Mundak and Shwetvatra Upanishads, Dua Suparna Sayuj Sakhya. The Supreme Lord and the individual soul are sitting in the body like two friendly birds in a tree. One bird is eating the fruits of the tree or reactions of the material activities, and the other bird, the super soul, is witnessing. Hare Krishna. Yeah. The goal of Vedantic study, therefore, is to know the Supreme Lord Krishna. This point is stressed in the Bhagavad Gita, chapter 8, verse 13, where it is stated that by the mystic yoga process, ultimately vibrating the sacred syllable Om, one attains to his supreme spiritual planet. In the Vedanta Sutras, which you have certainly read, the 4th chapter, Adhikaran 4, Sutra 22 states positively, Anavritti Shabdat, by sound vibration one becomes liberated. By devotional service, by understanding well the Supreme Personality of Godhead, one can go to his abode and never come back again to this material condition. How is it possible? The answer is simply by chanting his name constantly. Yes. No inclusion. This is accepted by the exemplary disciple Arjuna, who has perfectly learned the conclusion of spiritual science from the Yogeshwara, master of mystic knowledge.
Krishna, recognizing Krishna to be the supreme supreme Brahman, Arjuna addresses him. Hane Rishikesha, the word becomes joyful hearing your name, and thus do all become attached to you. Bhagavad Gita 11:36. The process of chanting is herein authorized as per the Personal means of contacting the Supreme Absolute Truth, the personality of Godhead. Simply by chanting the holy name Krishna, the soul is attracted by the Supreme Person Krishna to go home. Back to God. Thank you, Nandru. Yes, thank you, Prabhuji. Prabhuji, इसको आपने कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर लिया करिए, बहुत छोटा हो जाता है. हाँ, कई बार वो सही कह रहे हैं. मैं तो लैपटॉप में उसमें दिख रहा है. हाँ. अभी ठीक लग रहा है. हाँ. इतना ठीक है प्रभु. हाँ, this is better actually. Good. This is better. हाँ. Okay. Thank you, Ditro. ये ठीक है. ओके प्रभु जी, मैं ध्यान रखूंगा. अभी कल से इस फोन पे रखेंगे. नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, so we can stop here प्रभु जी. 8:25. Okay. We can start with the realization. After you प्रभु जी, please. तो यही है, मतलब ये कन्वर्सेशन है प्रभुपाद का और किसी फिलोसफर का जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डॉक्टर स्टॉल, और जिनका एक मत तो ये समझ में आया कि वो ऐसे किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, पर्सनल इम्पर्सनल को, बट ये सरप्राइज कि कैसे लोग पर्सनल से पर्सनल में मूव कैसे हो रहे हैं. तो वो इसके पीछे एक रीजन देते हैं कि चैंटिंग के माध्यम से उनको ये इंडियन फिलोसफी उनके अंदर इंड्यूस की जा रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह के पर्सनल एस्पेक्ट को जो इंडियन कल्चर में फॉलो होता है उसको मान रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि चैंटिंग ठीक है, बट कोई ऐसा सुप्रीम चीज तो है नहीं. तो ऐसा वो क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, बट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ अभी नहीं हो पा रहा है, वो ऐसा लगता है. और वो इस बात से तो सरप्राइज है कि पर्सनल से पर्सनल में कैसे है. तो प्रभुपाद पहले तो बोले हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चैंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है. और स्टार्टिंग में उनके बात से ऐसा लग रहा था कि ही इज इरिटेटेड विद दिस चैंटिंग, तो प्रभुपाद उसको करेक्ट कर दिए हैं. मुझे अच्छा लगा कि प्रभुपाद ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, मुझे लगता है कि वो भी हम लोग को याद करने चाहिए कि कल को कोई मिलता है तो हमारे पास भी रीजन हो कहने के लिए सततम विष्णु स्मरणम, जैसे कि हम बता सकें कि नहीं हमेशा भगवान के नाम की कॉन्स्टेंट चैंटिंग के बारे में भगवान बताएं भगवद गीता में. ठीक है, यही रियलाइजेशन है तो मेरा. थैंक यू जी. सब कुछ कवर हो गया एक्चुअली. तो क्वेश्चन आंसर के आंसर बस एक ही पॉइंट है कि क्या बोलते हैं उधर वो जो उसने पॉइंट बोला था वो अच्छा लगा मुझे, प्रोफेसर का भी, कि वो अप्रिशिएट करता है चैंटिंग को. तो वो मुझे अच्छा लगा कि ऑल्दो ही वाज favorable or not favorable, he appreciate the chanting. इंटरेस्टिंग है वो जानना है ना कि मतलब थोड़ा सा वो अजीब सा है कि एक तरफ तो वैसा बोल रहा है बट चैंटिंग को फिर भी वो अप्रिशिएट कर रहा है. इससे पता चलता है कि मतलब चैंटिंग इफेक्टिव होती है, इवन जो अवेलेबल नहीं है लोग उनको भी अट्रैक्ट करती है. थैंक यू. मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि जैसे बाहर के जो ये लोग हैं प्रोफेसर्स वगैरह, ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहले लोग ये सब फॉलो करते थे, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और मुस्लिम जो भी ये फॉलो करते हैं, एंड देन दे सडनली टर्न इनटू द एब्सोल्यूट ट्रूथ. पहले उन्होंने मतलब ये एक्सेप्टेंस दिया है कि ये लोग इन एब्सोल्यूट ट्रूथ बताते हैं, कि इम्पर्सनलिस्ट चीजें बताते हैं, बट they have already moved to the Vishnu, to the Krishna. They have realized that there is some power, there is some absolute truth. तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी कि they are accepting and they are following it. Yeah. Thank you. Amazing. Nice point, Kanak Mataji. Thank you, Prabhuji. Yes. Yes, Prabhuji, please. नहीं आप बचे, आप भी शेयर कीजिए. नहीं वही सारा कवर हो गया प्रभु. तो बस मेरे को तो वही अच्छा लगा कि
मतलब वो रेफरेंस जो दे रखा है हरे हरे कृष्णा महामंत्र क्यों जपना चाहिए, वो जो लोग बहुत सारे काउंटर करते हैं यही कि भगवत गीता में कहाँ मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है कि हरे कृष्णा ही जपे, हरे राम पहले क्यों नहीं जपे, पहले हरे कृष्णा ही क्यों जपे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि भगवत गीता में तो पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा। कुछ लोग तो यही कंक्लूड कर देते हैं भगवत गीता को पढ़ के कि भगवान इम्पर्सनलिस्ट है, मतलब कोई ऐसे मतलब कोई मतलब पर्सनल है ही नहीं। तो वो सब, और फिर हर एक नाम के ऊपर तो बहुत आता है क्योंकि चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट। कोई भी आता है मंदिर में तो वी यूज्ड टू से इस्कॉन में आता है कि चैंट हरे कृष्णा, तो वो कहते हैं कि चैंटिंग कहाँ लिखा है, हरे कृष्णा मंत्र कहाँ लिखा है। तो वो रेफरेंस है इसमें दे रखा है, वो भी ले सकते हैं। और मेरे को थोड़ा इसमें डाउट भी रहता है कि मतलब एग्जैक्ट कहाँ लिखा हुआ है कि यही जपिए, यही महामंत्र जपिए। वो आगे आएगा, डॉक्टर स्टॉल का भी डाउट है। ओके, तो प्रभुपाद देखते हैं कैसे क्लियर किए हैं। इस बुक में ये डाउट क्लियर हुए हैं। डॉक्टर स्टॉल को भी यही डाउट है, वो कह रहा है कि प्रभुपाद भगवत गीता का एग्जांपल देके बताएंगे ना। तो उसके बाद फिर वो कैसे उनको काउंटर किया है स्टॉल, फिर प्रभुपाद उस पर क्या काउंटर आर्गुमेंट डाले हैं वो सब बताएंगे प्रभुपाद। आएगा इसमें आगे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर में से मिल जाएगा आगे फॉर श्योर। और यहाँ पे जैसे स्क्रिप्चरल डिफरेंसेस ही चल रहे हैं ना, वो स्क्रिप्चर के माध्यम से आर्गुमेंट दे रहा है डॉक्टर स्टॉल भी, और प्रभुपाद भी स्क्रिप्चर के माध्यम से। तो प्रभुपाद फिर समझाएंगे उसे कि कैसे हम स्क्रिप्चर्स को भी यूज नहीं कर सकते हैं इसको कंक्लूड करने के लिए कि चैंटिंग, कांस्टेंट चैंटिंग और कौन सी चैंटिंग करें। समझे, कांस्टेंट चैंटिंग और कौन सी चैंटिंग। समझ रहे हैं। तो वो दोनों प्रपात उसको काउंटर करेंगे कि स्क्रिप्चर्स को भी आप साइड में रखो और आप देखो क्या, तो उसका जवाब देंगे प्रपात आके, है ना, आ जाएगा वो। वरना आपका लिए लेके आना फिर से टॉपिक, आपको अगर आंसर नहीं मिलेगा। ओके सर। ओके, सो विल स्टॉप। आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है देखो? नेक्स्ट वीडियो मैं आई विल ट्राई कि आज इवनिंग तक आ जाए पूरी। नहीं, फाइनली आप कब प्लान कर रहे हैं रिलीज करने का? इस वीकेंड? हाँ, इस वीकेंड, यस सर। वीकेंड ठीक है, संडे को कर दीजिए। ओके सर। कनक माता जी को भी प्रयास कीजिए, वो भी अपने साथ ले लेगा उनको, पीछे नहीं है सर, एक वीडियो है उनका। यस सर, यस। हाँ, इनका भी करते हैं पूरी, इस वीकेंड प्लान करते हैं। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। अंशकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सम्यक और भक्तवृंद की जय। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा।